बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। I don't remember a day in my life as an adult when I don't read Urdu poetry to myself or recite it or read it or enjoy it in some other way, listening to somebody singing it. As I walked in, a young lady was reciting such a beautiful Ghalib ghazal and I felt transported immediately. I knew I have come to the right place. And so my love is so deep for poetry. I feel very moved by these kinds of things. And it's the poetry that provides me with the courage to continue on the path and never give up. Because our poets have given amazing lessons. अब देखिए मीर ने क्या कहा, दैर से उठ के काबे आया मीर। मीर जो हैं वो दैर मीनिंग प्लेसेस वेयर यू वर्शिप आइडल्स, वहां से उठ के अब काबे आ गया है। ऑस्टेंसिबली ही हैज सीन द लाइट ऑफ डे। दैर से उठ के काबे आया मीर, जिसको चाहे खुदा खराब करे। What is Mir really saying? Mir is saying that it's very easy to sit in a mosque and say Allah, Allah. Yes, you will go to heaven for sure. But much harder to walk the walk. And that's the thing we have to do in real life. We have to face the crushing disappointments and experience the slings and arrows of outrageous fortune and yet never lose sight of what is happening. I'll recite a gorgeous ghazal here, which is of course not Ghalib, it's a contemporary. लेकिन कितनी खूबसूरत ये गजल है। सुए मैं कदा ना जाते तो कुछ और बात होती, वो निगाह से पिलाते तो कुछ और बात होती। ये बजा कली ने खिलकर किया गुल सिता मुअत्तर, ये बजा कली ने खिलकर किया गुल सिता मुअत्तर, मगर आप मुस्कुराते तो कुछ और बात होती। गो हवाए गुल सिता ने मेरे दिल की लाज रख ली। दिल की लाज रखना, इसका कोई तर्जुमा नहीं कर सकता। अब हवाए गुलसिता ने आपके दिल की लाज किस तरह रखी? गो हवाए गुलसिता ने मेरे दिल की लाज रख ली, अरे वो नकाब खुद उठाते तो कुछ और बात होती। ये खुले खुले से गेसू इन्हें लाख तू समारे, मेरे हाथ से समरते तो कुछ और बात होती। And then the last शेर for which I have read this ghazal, गो हरम के रास्ते से वो पहुंच गए खुदा तक। Same thing Mir is saying, right? दैर से उठ के काबे आया मीर, गो हरम के रास्ते से वो पहुंच गए खुदा तक, अरे तेरी रह गुजर से जाते तो कुछ और बात होती। That you have to really live with the humans, that the only way to reach God is by loving humans. You can't love an abstract idea until you show love for living and warm-blooded, fully fleshed human beings. You can't simply, you can't withdraw from real life and think you have found salvation. This is such a grand message of our poets. Every single poet we have, classical or contemporary, is completely united with one powerful voice, has told us that if the question is what is better, to love God or to love man, then the answer is that the only way to show your true love for God is to love man. मगर वो आसान नहीं होता ना, होती नहीं है यूं ही अदा ये नमाज इश्क, वो आसान नहीं है वो काम। होती नहीं है यूं ही अदा ये नमाज इश्क, यहाँ शर्त है कि अपने लहू से वुजू करो। That's what you have to do.
And that's why the walk is that difficult. So, the point I'm trying to make, and I'll end this part because I feel so moved by Urdu poetry. This is what inspires me to continue no matter what and keep telling everybody that I came to America to cure cancer, not to extend life of cancer patients by 6 months or 8 months. No, cure. And even the courage to be able to say that comes directly from poetry to me.